Okay, one last thing with the helicopter game. Obviously, things are happening. We are flying the helicopter, we're firing missiles, we're killing enemies. लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर में से आवाज़ कोई नहीं आ रही. So, if you want to add sounds to your game, किसी भी किस्म की sounds हो, music हो, effects हो, उसके लिए we need to associate some sounds with some objects. For example, अपने हेलीकॉप्टर के अंदर I will add one property. I'll go to add component और इसको हम कहेंगे audio source. So everything which is making sound in the scene will be an audio source. हमने एक audio source इसमें add की आपके हेलीकॉप्टर में. So आपके हेलीकॉप्टर में rigid body भी है, collider भी है, script भी है और अब एक audio source भी है. इस audio source में sound कहाँ से आएगी? हमारे folder में for example मैंने ये एक हेलीकॉप्टर की wave file डाली हुई है. आप wave file ले लें या mp3 ले लें. OGG files भी probably supported हैं. So you can just drag a sound file into your folder, बिल्कुल वैसी जैसे हम image को import करते हैं और आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर की ये साउंड हमारे पास आ गई. अब what I will do is probably I can play this over here. Oh, it's a bit too loud with my speakers right now. So here we have the helicopter sound. इस helicopter sound को I will put in my helicopters. Helicopter ये audio source. इस sound को drag करके I will put here. ना सिर्फ ये कि I will put here. Make sure that play on awake is checked. जैसे ही game चलेगी ये sound चलना शुरू हो जाएगी. और loop भी click कर दें तो ये बार बार यही sound repeat होती रहेगी. तो अब जब मैं अपनी game run करूँगा तो you will see that I actually have a sound working here for me. So मेरे हेलीकॉप्टर में से अब साउंड निकल रही है and I can actually fire missiles as well. This is how you actually add any sound. So आप enemy के लिए अलग sound रख लें, missile के लिए अलग sound रख लें. जब भी वो object create होगा, you will play the sound. Audio source is the key for adding sounds to your game. So that's all for this video. See you in the next video.